Dear students, in last lecture we studied partial differential equation, its order and degree with various examples. There are different methods of solving the partial differential equation. Lagrange's linear partial differential equation by method of grouping. Then homogeneous partial differential equation by finding CF and PI. And the application is a by variable separable method. Right. So today we will discuss the how to solve the partial differential equation by variable separable method. In first lecture we already discussed it, and the simple examples, also one example was discussed in detail and two simple examples were given as homework. Now today also, we in this lecture we are going to discuss the different examples of higher difficulty level. Is that clear? So can we start here? So solve the equation del u by del x equal to 2 into del u by del t plus u, given u of x0 is equal to 6 into e to the power minus 3. This is the condition, initial condition. Alright, initial condition. So here given differential equation is written as del u by del x is equal to 2 into del u by dt plus u equal to 1. Is that clear? Now, basically, here dependent variable is u, right? And it is a function of x and t. And therefore, u can be written as a product of x and t, where x is a function of x and t is a function of t. Is that clear? So, here u is equal to x of x into t of t, that is equation number 2. Now differentiating equation 2 partially with respect to x. Is that clear? So let us see, del u by del x is equal to x dash into t, and partially with respect to y, del u by del y is equal to what? X into t dash. Okay, so you will get x dash t when we differentiate partially with respect to x, and x t dash when we differentiate partially with respect to t. Okay, so where x dash is what? X dash is equal to dx by dx or del x by del x, and t dash is what? T dash is equal to del t by del t or dt by dt. Is that clear? So we have x dash and y dash as we discuss here. Okay, x dash and t dash. So this is x dash, it is del x by del x. Is that clear? So let us see now substituting values in equation 1. So which values? This value del u by del x, del u by del x, and del u by del t in equation 1. Here del u by del x, del u by del t. So you will get x dash t is equal to 2 x t dash plus u, that is xt. Right? So we have this. Is that clear? So look at here. X dash t is equal to 2x t dash plus xt. Is that clear? So now separating variable. So when we separate variable, we divide both side by x into t. So you will get this x into t. So what you will get? X dash t upon xt, that is x dash by x t cancel. 2x t dash by xt, that is x's cancel हो जाएगा, 2 t dash by t plus xt upon xt, that is 1. So you will get this. Is that clear? This is what? Constant. K is a constant. Okay, now there are two ratios. One is x dash by x is equal to k, and another is 2 t dash by t plus 1 is equal to k. This is 1, this is 2. 1 को अगर हमने solve किया तो we will get the answer of x, and 2 को solve किया तो we will get the answer of t. Sorry, answer of t. Is that clear? So let us see first x dash upon x is equal to k. Okay.
So x dash is what, as we have seen in previous slide, that is dx by dt or del x by del x. It is a x dash is equal to what? X dash is equal to del x by del small x. Okay, so we have this. Okay, now multiplying by this dx to both sides, so you will get dx by capital X is equal to k dx. Okay, so you will get this. Now on integrating, so integration of 1 upon capital X d capital X is equal to log of capital X, or integration of k dx is what? K into x. Okay, so you will get this log x is equal to kx plus constant of integration, this is c, that is log a. Now taking log a on left hand side, log x minus log a is equal to kx, this, and this can be written as log of x by a is equal to kx. Okay, and therefore x by a is equal to e to the power kx, right? So you will get e to the power kx. Multiplying both sides by a, so a capital X is equal to a into e to the power kx. This is the first solution we have got from this one. Is that clear? So ये हो गया हमारा one. Then second, 2t dash by t plus 1 is equal to k. Is that clear? So now take this 1 on right hand side, तो k minus 1 हो जाएगा. So you will get here t dash is what? Del t by del t, del small t upon capital T is equal to k minus 1 upon these two. Okay, so you will get k minus 1 by 2. Now multiplying by dt to both sides, so you will, what is left? dt by t is equal to k minus 1 by 2 into dt. So you will get this. Okay, now on integrating, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log t, इसका इंटीग्रेशन होगा k माइनस वन बाई टू टी प्लस लॉग बी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो आपको मिलेगा ये. ओके, नाउ टेक दिस लॉग बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो लॉग टी माइनस लॉग बी हो जाएगा. ओके, एंड दिस इज व्हाट? लॉग ऑफ कैपिटल टी बाय बी इज इक्वल टू, एंड देयरफॉर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t by b is equal to e to the power this whole thing. Okay, so you will get this, that is here is what? K minus 1 by 2 is there here, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो दिस k minus 1 by 2 upon 2 होना चाहिए यहाँ पे. Is that clear? So t is equal to, multiplying both side by b, so you will get t is equal to b into e to the power k minus 1 by 2, and this is our second solution. So we have got the x, we have got t, and you know z is u is equal to what equation? 2xt. Okay, and therefore by 2 you will get u is equal to, this is x, and this is what? T, right? So we can grouping this, that is a into b पहले लिखेंगे आप, e to the power kx into e to the power k minus 1 by 2 into t, और e का पावर एडिशन कर लिया, तो इट के एक्स प्लस के माइनस 1 by 2 t. So u is equal to this. This is the solution, general solution. Okay, now we have to use the condition. What was that condition? U of x0 is equal to 6 into e to the power minus 3x, right? So using that condition, this condition, u of x0 is equal to 6 into e to the power minus 3x. Okay, now to apply this condition in previous equation, in previous one, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? t इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो के एक्स बचेगा खाली e to the power के एक्स. ओके, एंड देयरफॉर you will get, put t equal to 0 in 3, so you will get here u of x0 is equal to 6 into e to the power minus 3a. This is given, this is given. Okay, and this is what? By equation 3, ab into e to the power kx as t is equal to 0, t is equal to 0 in 3. बराबर है? So you have got, so now you compare these two. So you have this 6 is equal to ab, this ab is equal to 6, एंड ई दोनों साइड में ई है, तो यहाँ पे ई का पावर है माइनस 3x, और यहाँ पे ई का पावर है के एक्स, तो के इज इक्वल टू माइनस 3. सो व्हाट इज द आंसर? ए बी इज इक्वल टू 6 एंड के इज इक्वल टू माइनस 3.
Substitute this value in equation 3. So that will be required solution. So by 3, AB equal to 6 e to the power minus kx था वहाँ पे, so it is minus 3x plus k minus 1, that is minus 3 minus 1 by 2 into t, okay, and that is equal to minus 3x plus it is minus 4 by 2 and a minus 2, so minus 3x minus 2t, minus taken common, to 6 into e to the power minus of 3x plus 2t, and that is the final answer of example number 1, that is 4. Is that clear? So do you understand how to solve the partial differential equation by using the initial condition? Now another example there. This is required solution. Now solve the differential equation for del u by del x plus del u by del y is equal to 3u. Okay, the condition is given u is equal to e to the power 3 into e to the power minus y minus e to the power minus 5y when x is equal to 0, means आपको condition apply करना है u of 0 y, right? So let us see first given differential equation. और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे u, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है स्मॉल x, तो स्मॉल x का फंक्शन है कैपिटल x इंटू स्मॉल y का फंक्शन है कैपिटल y ऑफ स्मॉल y, एंड दैट इज इक्वल टू, let consider u is equal to x into y, where x is the function of small x and y is the function of small y. Okay, so this u is equal to capital X into capital Y. Now differentiating u partially with respect to x, तो x dash y हो जाएगा. Differentiating u with partially with respect to y, तो x y dash हो जाएगा. तो ये देखो x and y are the functions of small x and small y alone respectively. तो differentiating both sides partially with respect to x and y respectively. So ये मिलेगा del u by del x is equal to x dash y और del u by del y is equal to x y dash. Substitute this value in equation 1, तो ये हो जाएगा 4x dash y plus xy dash is equal to 3, u is capital X into capital Y. So okay, where x dash is what is x dash? X dash is equal to del capital X by del x, and what is y dash? Del capital Y by del small y. It is also equal to d capital X by d small x, and it is what d capital Y upon small y. Okay, substituting the values in equation 1 now, तो क्या मिलेगा 4x dash y, it is the value of del u by del x, and plus del u by del y xy dash is equal to 3u, means xy. Now to separate the variable, what we do? Divide both sides by capital XY. Okay, so you will get this 4x dash upon x is equal to 3xy upon xy, that is 3, minus xy dash upon xy, that is y dash upon y, and let it be equal to k. कैसा है ये देखो 4x dash y upon xy is equal to plus xy dash upon xy is equal to 3xy upon xy, राइट. x कट गया, y कट गया, x वट, यहाँ पे x कट गया, बराबर है, यहाँ पे y कट गया, तो क्या बचेगा 4x अपॉन x डैश अपॉन x, ये आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 3 बचा, ये 3 है, माइनस y डैश अपॉन y, ये आ गया, एंड लेट इट बी इक्वल टू k constant. K is the constant. Is that clear? Now look at here. Now for पहला, अब ये पहला रेशियो हम यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एक्स की वैल्यू मिलेंगे, और दूसरा रेशियो हम ये सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे दूसरा, तो कैपिटल वाई की वैल्यू मिलेंगी. इज दैट क्लियर? तो 4x डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, तो यू विल गेट के बाय 4 हो जाएगा, ये एक्स डैश इज वॉट डेल एक्स बाय डेल स्मॉल एक्स, तो यू विल गेट दिस dividing by 4 to both side and multiplying by del x,
तो यू विल गेट दिस dx अपॉन x इज इक्वल टू k बाय 4 dx. नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, k बाय 4 dx, दैट इज k बाय 4 x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log a. Okay, so you will get this. All right. Now take log a on left hand side. So you will get this. And this would be equal to log x by a is equal to this. तो x by a is equal to e to the power k by 4x. तो ये हो गया e to the power x by a is equal to e to the power k by 4x. Is that clear? So multiply both side by a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल x इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर k बाय 4x एंड दिस इज वन सोल्यूशन, कैपिटल A. एक सोल्यूशन हो गया. ओके, देन यू सी दूसरा था 3 माइनस वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू के. 3 को हम राइट हैंड साइड में लेके गए, के माइनस 3 हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस के हो जाएगा वो, बराबर है. तो वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू y dash, this is y dash, this is the value of y dash upon y is equal to 3 minus k. Is that clear? Now multiplying both side by dy, so you will get dy upon y is equal to 3 minus k into dy, 3 minus k into dy. On integrating, इसका इंटीग्रेशन होगा log y, इसका इंटीग्रेशन होगा 3 minus k into y प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज log b. तो ये हो गया. ओके, टेक log b ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो log y माइनस log b हो जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस के वाई. log y माइनस log b क्या होगा, log ऑफ कैपिटल y बाय b, बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस. इज दैट क्लियर? सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, b इंटू ई टू द पावर 3 माइनस के वाई. राइट, b इंटू ई टू द पावर 3 माइनस के वाई, बराबर है. y बाय b इज इक्वल टू ई टू द पावर दिस. ओके, मल्टीप्लाइंग बाय b, तो b यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस इज आवर अनदर सॉल्यूशन, कैपिटल b. ओके, सो a से हमको क्या मिला, कैपिटल x, b से हमको क्या मिला, कैपिटल y. ओके, सो सॉल्यूशन इक्वेशन 2 क्या था हमारा, u इक्वल टू x इंटू वाई. तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, सो दैट इज ये हो गया कैपिटल x, ये हो गया कैपिटल y. ओके, नाउ इसको थोड़ा ग्रुपिंग करेंगे अब, a इंटू बी इज इक्वल टू इसको भी कंबाइन कर लेंगे. सो यू विल गेट दिस ए बी ई टू द पावर k बाय 4x ई टू द पावर 3 माइनस के वाई. सो यू विल गेट दिस ए बी इज इक्वल टू लेट ए बी इज इक्वल टू कैपिटल ए. तो आपको ये सॉल्यूशन मिला इक्वेशन 3. इज दैट? नाउ वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन. कंडीशन क्या दिया, u इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3y समथिंग, राइट, बराबर है. तो अप्लाइंग कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन. ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन बिकॉज दे लुक एट हियर, द गिवन प्रॉब्लम इज दिस. सो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे पास ये जो है ई टू द पावर माइनस वाई, ई टू द पावर माइनस 5y मीन्स व्हाट, वी हैव टू यूज द बाउंड्री कंडीशन इन टू टर्म्स एंड देयरफॉर जो सॉल्यूशन हमको मिला है उस सॉल्यूशन को हम दो एंड में कंसिडर, इनिशियल पॉइंट में, दैट इज a1 इंटू b1, a1 प्लस b1 के फॉर्म में. तो ये जो सॉल्यूशन है मिला, ये सॉल्यूशन जो मिला, तो वी टेक एट फर्स्ट एंड एट a1 कैपिटल a1 k1 k1 और another end we use at a2 k2 k2, right? So let us see, for boundary condition we can write a1, look at here, a1 k1 k1 a2 k2 k2. Okay, and now using put x is equal to 0, this u is what, it is u of x comma y. तो पुट x इज इक्वल टू 0 हियर, तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 रखा तो ये 0, ये e टू द पावर 0 हो जाएगा, ये भी e टू द पावर 0 हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा, a1 इंटू ई टू द पावर 3 माइनस k1y प्लस a2 इंटू ई टू द पावर 3 माइनस k2y मिला, u ऑफ 0y. बट u ऑफ 0y कितना दिया है, इट इज गिवन u ऑफ 0y, ये गिवन है, बराबर है, इज इक्वल टू दिस. इज दैट क्लियर? नाउ अब दोनों साइड में हम इक्वेट करेंगे,
ये पहली टर्म जो है इसके साथ में इक्वेट करेंगे. 3 e to the power - y इज इक्वल टू a1 e to the power 3 minus k1y. तो आपको मिलेगा a1 इज इक्वल टू 3 और 3 माइनस k1 इज इक्वल टू -1. तो k1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4. बराबर है. और दूसरा इसके साथ में हम ये कंपेयर करेंगे. तो a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 और 3 माइनस k2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5. तो k2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8. Is that clear? So we have got this. Look at here. A1 is equal to 3. मिला A1 is equal to 3. A2 is equal to -1. Is that clear? And also K1 is equal to 4. मिला K1 is equal to 4 and K2 is equal to 8. K2 is equal to 8. Is that clear? So ये हो गया K2. Understand? Now substituting this value of A1, A2, K1, K2 in equation 4. Okay, so by 4 what you will get u is equal to ये की a1 की वैल्यू क्या है 3 इंटू ई टू द पावर k1 की वैल्यू क्या है 4. तो 4/4x आ गया 4/4x इंटू ई टू द पावर 3 माइनस k1 इज 4. तो 3 माइनस 4 इंटू वाई दैट इज -y 3 माइनस 4y प्लस a2 की वैल्यू क्या निकाला हमने -1. तो -1 बराबर है e टू द पावर k2x that is 8/4x e to the power 3 minus k2 that is 3 minus 8y, right? So it would be equal to 3 e to the power 1x e to the power minus 1y minus e to the power 2x e to the power minus 5y. बराबर है. तो आपको मिला 3 e to the power x e to the power minus y. So that is e to the power x minus y. Okay, 3 e to the power x minus y. बराबर है. और ये देखो दूसरे टर्म में क्या होगा e to the power minus 2x 2a प्लस 2x और e to the power minus 5y. तो e to the power कितना होगा 2x minus 5y. ये 2x minus 5y, राइट. और ये माइनस साइन है. सो दिस इज फाइनल solution. Is that clear? So this is required solution. So these are the two examples we discussed today are slightly difficult than the previous lecture, right? So now sixth example. Solve the differential equation 3 del u by del x plus 2 del u by del y is equal to 6. Given that u of x0 is equal to 4 into e to the power minus x. So in this example, what you will do? U equal to u is a function of x, so capital X. U is also function of y, so into capital Y. Okay, तो del u by del x is equal to हो जाएगा x dash y और del u by del y हो जाएगा it is y dash x into y dash x into y dash. ये अगर वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा 3x dash y प्लस 2x y dash इज इक्वल टू 0. अब इसको वेरिएबल सेपरेट करेंगे. सेपरेट वेरिएबल एंड सॉल्व x and y. Substitute and apply condition. Is that clear? You will get the required answer. Is that clear? So that is the example number 6, which is homework to solve at home. So in this way, this lecture is completed. And again, the problem for higher difficulty level, we will discuss in our next lecture. Right? So if you like this lecture, please subscribe the channel. If you are not subscribed yet, share it to the friends. Like it. Thank you very much.